Hello and welcome to IDL Academy once again. Dear listeners and students, we'll be learning about noun genders in today's lecture, which is a very informative topic, and most of the students face problem understanding some nouns and using relevant pronouns for them. So we have some, noun genders, and there are basically four noun genders. So we have the first one, which is masculine. Masculine is the full form of male or masculine are those genders which are used for male genders or male names. In simple words, names that refer to male creatures. For example, we have brother, Rehan, Haris, father, or all the names that are used for male or male creatures. Secondly, we have feminine. Feminine is the full form of female. Now, names that refer to female creatures or female beings, we call them female or feminine, like mother, sister, name like Aisha, or any female name like Fatima or any name. Now, third we have is common gender. Now, common gender is very interesting and very important to understand. Names that refer to both or names that can be used for both male and female creatures, we call them कॉमन जेंडर. कुछ ऐसे नाम हैं जो हम दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मर्द और औरतों के लिए. फॉर एग्जांपल नेम्स लाइक कजन. नाउ कजन कैन बी अ मेल कजन, कजन कैन बी यूज्ड फॉर द फीमेल कजन. द वर्ड लाइक स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट कैन बी मेल स्टूडेंट, स्टूडेंट कैन बी फीमेल स्टूडेंट. सिमिलरली द वर्ड टीचर, टीचर कैन बी बोथ, टीचर कैन बी अ फीमेल टीचर, टीचर कैन बी अ फीमेल टीचर. इसी तरह बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, तकरीबन सारे प्रोफेशन ऐसे हैं लाइक इंजीनियर, like doctor, pilot, scientist, or even mechanic. They are used for both or can be used for both. मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. And the last we have is neuter gender. So this word is pronounced as neuter. इस word को जो है neuter पढ़ा जाता है, उसको neuter पढ़ते हैं. Neuter gender कौन से होते हैं? Neuter genders are those genders or those names which are used for non-living things. इसमें दो चीजें हैं, बेजान चीजें, तमाम नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान चीजें, एंड टू दोज लिविंग थिंग्स हुज जेंडर इज अननोन, और वो जानदार चीजें जिनका जेंडर जो है स्पेसिफिक ना हो, तो उसके लिए हम न्यूटर जेंडर यानी प्रोनाउन इट का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव बुक, सो वी डोंट यूज ही और शी फॉर बुक, रादर वी यूज इट. चेयर, ट्री, लिजर्ड, और लाइक ट्री, दरख्त जो है वो एक जानदार चीज है. लिजर्ड यानी चिपकली, या फॉर एग्जांपल एंट, या फॉर एग्जांपल कॉकरोच, और इवन स्नेक. दीज आर लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग्स. लेकिन चूंकि इनका जेंडर हमें स्पेशली पता नहीं है, तो ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर कहता है कि यू डोंट नीड टू कंफ्यूज योरसेल्फ कि आपने ही लगाना है, शी लगाना है. जस्ट यूज इट एंड पुट इट इन द कैटेगरी ऑफ न्यूटर जेंडर. सो मेल, मास्कुलिन मर्दों के नाम, ऐसे नाम जो मर्दों के इस्तेमाल होते हैं. फेमिनाइन फीमेल, ऐसे नाम जो हम औरतों के इस्तेमाल करते हैं. कॉमन जेंडर, ऐसे नाम जो हम मर्दों और औरतों दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. एंड न्यूटर, तमाम बेजान चीजें लाइक कॉपी, टेबल, चेयर, बुक, मार्कर, और वो जानदार चीजें जिनका जेंडर आपको स्पेसिफिकली पता ना हो, पार्टिकुलरली पता ना हो, तो यू कैन ट्रीट इट एज अ न्यूटर जेंडर. सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर. इट वाज इजी एंड सिंपल अबाउट नाउन जेंडर्स. प्लीज लीव सम examples in the comment, hit the like button and subscribe our channel for more English grammar related videos. Thank you so much.